first Lok Sabha election, you know, I was in the foreign service, and Rajiv Gandhi ji was the Prime Minister. I was contesting from Bijnor, and one was a stalwart already. The other one became a stalwart much later. That is Mayawati and Ram Vilas Paswan were fighting also in the fray. Sometimes, and then I would say, why were you so loud? Oh, I got the phone call from my leader of my party. Why aren't you loud? You're not loud enough. मैं तो कहूँ कि speaking softly should be made a national policy. माँ वहाँ से लौट रही थी तो इधर से एक लॉरी आई, उसमें बंदूक ताने हुए सब सिपाही खड़े थे। माँ की तरफ भी बंदूक ताना उन्होंने। माँ ने आँख बंद कर लिया कि अब गए। साथ ही हमें देखते हैं। मुझे उस समय बहुत बड़ा झटका लगा। स्कूल में उनके लिए खास घड़ा रख दिया गया पानी पीने को। ये अछूत घड़ा है, तो बाबूजी ने उसको पत्थर से तोड़ दिया। Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Aabir Lahiri. You are listening as well as watching Wassup Aabir podcast. We are recording this episode on 5th of April 2023, which happens to be the birthday of a stalwart political leader who had made a significant change in our Indian democracy, and also happened to be the father of our today's guest, Madam Meira Kumar. It's my pleasure. I can't tell you from how long I have been trying to do this interview, because you are that calmness in a chaos we are living in today. Thank you very much for agreeing to this interview. Thank you for the compliment, and my greetings to the audience. How have you been? How are things? I've been well, personally, but so I've been concerned about the developments in the country and also abroad. True. You have recently spoken as well about the how the Lok Sabha is functioning, and you were the leader. You were the Lok Sabha speaker who gave so much calmness to the entire chaos we see in Lok Sabha. How do you look at those days? What has, in your opinion, significantly changed? क्या बदल गया है इतना? True. और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब हमारे चुनाव होते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हम बनाते हैं। कि हमारी जो जनसंख्या है अब तो 1 नंबर पर है, पहले 2 नंबर पर थी, लेकिन सबसे बड़ी जनसंख्या है। और यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी संख्या कितनी बड़ी है, और हर मतदाता को सिर्फ एक मत देने का अधिकार है। इतनी बड़ी क्रांति कि हम, चाहे आप कोई भी हो, कितने बड़े भी हो, कितने ताकतवर हो, कितना भी आपके पास धन हो, आपको एक वोट है। और कोई कितना भी गरीब हो और एकदम कमज़ोर हो, उसके पास भी एक मत है। तो इतनी बड़ी क्रांति, बराबरी का ऐसा सबूत और ऐसा बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ है। आपने बहुत सही चीज़ बोली। मैं पता नहीं, जब भी आप बोलते हो आई जस्ट फैन बॉय ओवर द एंटायर स्पीच। आई डोंट नो व्हाई। हाउ डू यू, आपको इन जनरल कभी ज़िंदगी में गुस्सा आता है या पहले आया है, कभी ऐसा होता है? बिकॉज आई कांट इमेजिन दैट साइड। नहीं, गुस्सा आता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन में बहुत दुख पहुंचता है और उसके बाद गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आएगा तो मैं अपने को माफ़ नहीं कर सकती हूँ, और लोगों को भी मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गुस्सा आना चाहिए, और उस गुस्से का कुछ नतीजा भी निकलना चाहिए। ट्रू। ज़िंदगी में आपके लाइफ के को अगर देखा जाए, उसमें अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, टुडे इज़ योर फादर्स बर्थडे। ही हैज़ बीन अ लीडर जिन्होंने हमेशा इक्वालिटी की बात की। उन्होंने इस तरीके से उसको बात की कि आज भी पूरा इंडिया उसको जानता है। हाउ हैज़ बीन योर इक्वेशन विद हिम? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू लर्न फ्रॉम हिम? एनी चाइल्डहुड मेमोरीज जो आज के दिन ऐसे नॉस्टैल्जिया में दिमाग के किसी एक कोने में ऐसा ग्लिम्स में रहता है? मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा, उनसे सीखा, अपनी माँ से सीखा, और ये तो सभी के लिए स्वाभाविक है कि अपने माता पिता से सीखते हैं। तो उनको हमेशा हमने देखा कि वो
मुस्कुरा रहे हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो अपने को एक तो संतुलन में रखना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो घबराहट को दिखाएं और दूसरे को भी ऐसे में डाल दें। तो हमारे समाज में बहुत गैर बराबरी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है, जाति को लेकर के है, मज़हब को लेकर के है। मज़हब में भी बहुत सारे पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सेक्ट्स हैं, उनको लेकर के है। हमारे यहाँ बहुत सी भाषाएं हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे संसद में 22 भाषाएं हैं। तो और इसके अलावा इतनी सारी डायलेक्ट्स है, बोलियां हैं, तो उनको लेकर के है, प्रांतीयता को लेकर के है, पैरोकियलिज्म। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के हम विभाजित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम संवेदनशील हो जाते हैं और कभी गुस्से में आ जाते हैं। तो और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो हमें विभाजित करती है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों, वो है जाति पाति। क्योंकि ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, ये सब में चली गई है। तो इसमें इसकी दिक्कत ये है कि इसमें लोगों को नीचा दिखाया जाता है, और जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। आप भले ही उसको चोट ना पहुंचाएं, वैसे चोट भी पहुंचा दी जाती है, मार भी दिया जाता है, लेकिन भले ही आप ये ना करें, मगर आपके इशारे से, आपके किसी शब्द के इस्तेमाल से उसको बहुत ठेस पहुंच सकती है। तो ये हम अपने समाज में ना करें, क्योंकि बहुत से समाज इस समय सभ्यता के इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने गैर बराबरी का निदान निकाल लिया है। हम इतनी बातें करते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम वी आर प्रोग्रेसिव, वी हैव डन दिस दैट, बट व्हाई दिस? हम आज भी इसी जाति पाति के पूरे चंगुल में फंसे हुए हैं। व्हाट डू यू सी, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? एक दफ़ा मैंने बाबूजी से बात पूछी थी, आपके मन में ये प्रश्न है, मेरे मन में भी ये प्रश्न है। तो बाबूजी ने कहा कि अगर हमें ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मिल जाएं, जैसे खाने को मिल जाए, हमें कपड़े मिल जाएं, रहने को मिल जाए, और बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो जाए, तो हम दो चीज़ ढूंढते हैं। एक तो कि हमें प्यार मिले, वो हम चाहते हैं कि हमें स्नेह मिले, और एक हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले। तो प्यार और स्नेह हमें मिल जाता है क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, तो हमें परिवार में स्नेह और प्यार मिल जाता है। वो इमोशनल नीड्स, सोसाइटल नीड्स, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन सम्मान पाना बहुत मुश्किल है। सम्मान पाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको कुछ हासिल करके दिखाना पड़ता है, और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। तो वो बहुत कठिन है। अगर आप पैदा होते ही जाति के कारण सम्मान हासिल कर लें, आप में बहुत सारे दुर्गुण हैं, फिर भी जाति के कारण आपके सामने लोग हाथ जोड़ें और आपको सम्मान दें, तो आप उस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जाति पाति की व्यवस्था, हर चीज़ बदल जाती है, समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप सोचें, आप बताएं, कोई ऐसी चीज़ है जो समय के साथ नहीं बदलती? सब कुछ बदल जाता है। भाई जाति व्यवस्था इसलिए नहीं बदलती है कि जो जातियाँ इसके कारण सम्मान पाती हैं वो नहीं चाहती कि इसे बदला जाए, और जो इसके कारण अपमानित होती है वो इतनी कमज़ोर हैं कि वो बदलने की स्थिति में नहीं रहती हैं। बट कभी ना कभी ऑप्टिमिज्म में कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपने भी सोचा होगा कि शायद आज से 50 साल बाद या 25 साल बाद जब 100 साल इंडिपेंडेंस के हो जाएंगे, तब कुछ तो, मैं भी तो एक रे ऑफ सनशाइन उम्मीद करूंगा कि शायद तब कुछ ऐसा। मैं भी चाहती हूँ। मेरे पिताजी पूरी ज़िंदगी ये चाहते रहे, उसके लिए वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे पूरी ज़िंदगी। मैं भी करती हूँ,
और मेरी ज़िंदगी का ये एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, मिशन है, और मैं चाहूँगी कि ये ऐसा हो, ऐसा हो। बट लुकिंग बैक एट दोज डेज, लगता है कि कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है? हाँ, आया? मैं समझती हूँ आया है। पहले जो दबा हुआ तबका था, जो प्रताड़ित था, वो आगे नहीं बढ़ पाता था। अब देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें अफसर बन रहे हैं, उनमें डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पढ़ लिख कर ऊपर उठ रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। ये अब तब्दीली है, लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं, मुझे उस समय बहुत बड़ा झटका लगा। 100 साल पहले मेरे बाबूजी जब गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में गए, तो स्कूल में उनके लिए एक खास घड़ा रख दिया गया पानी पीने को। ये अछूत घड़ा है। तो बाबूजी ने उसको पत्थर से तोड़ दिया, फिर एक और रख दिया, फिर उन्होंने उसको फिर पत्थर से तोड़ दिया, फिर तीसरा रखा, फिर तोड़ दिया। अंत में वो लोग तंग आकर बोले, और बल्कि मैं समझती हूँ प्रिंसिपल जो थे वो प्रगतिशील विचारों के थे, तो उन्होंने कहा अब एक ही घड़ा रखा जाएगा, पीना है तो पियो, नहीं पीना है तो मत पियो। तो 100 साल पहले ये हुआ। अभी आपने सुना होगा जालौर में, राजस्थान में, इंद्र कुमार मेघवाल नाम का एक बच्चा था जिसको जान खो देनी पड़ी अपनी। ठीक यही हादसा हुआ। उसने पानी पी लिया अपने प्राध्यापक के घड़े से, तो उसकी जान चली गई। तो वो तब मैं सोचती हूँ कि हम आगे बढ़े हैं जैसा मैंने बताया, मगर क्या हम पीछे भी तो चले गए हैं। उस समय बाबूजी की जान बच गई 100 साल पहले, 100 साल बाद जान चली गई एक बच्चे की। तो ये बहुत ही विचित्र सी स्थिति है, बहुत इसमें विडंबना है, ये बहुत जटिल है। ऐसा आसान नहीं है कि हम कह दें कि ठीक है आगे बढ़ गए हैं या पीछे चले गए। हम नहीं कह सकते, हम आगे भी बढ़े हैं, हम पीछे भी चले जा रहे हैं। ट्रू ट्रू। मैम, अगर आपका पानी आ रहा हो प्लीज़ ले लीजिएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो लाइक इफ़ यू फील लाइक हैविंग वाटर प्लीज़ बिंदास। तारा पानी दे दो। सो if we you've created a very good ambience. Thank you very nice. much. I'm very comfortable. Thank you very much. Thank you very much. When I see your career as a Lok Sabha speaker, those 5 years, and not only those 5 years, if you compare it with a lot of other people as well, often people will have more respect for you because you were very, very calm there and very quiet there. Especially in a chaos where opposition is fighting, you are fighting, everybody is there. Why that kind of a respect you got which nobody else ever received? What do you think about that? Oh my God, I didn't think of it that way. Thank you so much for saying it. I have many colleagues who are of my age, who are maybe younger than me, who always cherished you for that. Ki wow, how can she be so quiet? Please have it, no problem. I think you'll have to stop it. उनको प्लीज पानी दे देंगे थोड़ा, उनको रोजे खोलना है। पानी दो और कुछ खाने को दो। We can stop for a minute. I think let him break his. He'll have it, no problem. He'll have it. इनको वहाँ ले जाकर खिला दो, उस कमरे में ले जाके खिला दो इनको, उनका रोजा। He'll just have it. He has promised me, कोई issue नहीं है, आराम से। So for all those people who are wondering क्या चल रहा है, if this goes on air, Salman is our colleague who is also the director of photography for this episode. He's fasting because the Ramzan का महीना चल रहा है। He is fasting and he is fasting both. No, he is not fasting. अच्छा, you are fasting. Oh, then you can't go. So ma'am just offered कि रोजे का टाइम अजान चल रही थी, so she just offered. हाँ, so we were talking about you. Like, why do you think you got that kind of respect? जो हमेशा हर एज के लोगों को अपील किया। इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। It's very kind of people. They are very nice to me. Really, frankly, I have no answer to this. Okay. Thank you for being modest, I believe then. Let's talk about Congress. थोड़ा बहुत. You have been an active part of Congress. You have been one of the tall leaders of Congress.
Recently, though tenure say Congress has lost the Lok Sabha battle, what do you think about the future? How exactly it will bounce back and come into action, or whatever you feel like saying? You see, we are a party committed to an ideology, and that ideology is the ideology of this country, because this is one of the few countries which has 8 major religions. Very few other countries have 8 major world religions. We have them. And then we have hundreds of sects. Now, for centuries, we've all lived with these religions. True. We have imbibed them. We cannot be impervious to them. I belong to a certain religion, but then I also have, I'm sure, imbibed so many things of other religions. I'm a Hindu. I have so many things that I've learned from Islam, so many things I've learned from Christianity, so many things I've learned from Jainism, from Buddhism, from Judaism, from Zoroastrianism. Yes, True. I would be an unnatural person if I say, no, I am impervious to all that. How can you be? Because these religions are in the air and in the earth of this country. True. So you have them inside you. And this is the ideology of our country. And this is the greatness of our country. The party in which I am, the Congress party, is the party which says, yes, we let all these religions flourish. And the statecraft, politics, should stay away from that, which is fair enough. Now, your religion is your personal concern. You should pray in your heart. Best is to pray in your heart. Right. And then you pray in your prayer room, or you in the place where you should be praying. But let's keep it away from politics. This is the ideology. Now there's a clash between these two nowadays, between these two ideologies. But I think what should happen is that in a multi-religious country like ours, the government, the political parties, the executive, and other organs of the state should stay away from religious concerns. They should not dabble in it. Okay. How was your first Lok Sabha election? If we are talking about so much about politics, if we are talking about everything, so how was what's your memory of the first Lok Sabha election? How was the campaigning? Kaisa tha? Oh, first Lok Sabha election, I was in the foreign service, and Rajiv Gandhi ji was the Prime Minister, and he asked my father whether I could resign and join politics and fight from Bijnor. My father said, okay. So that's how I was contesting from Bijnor, and 2 stalwarts. One was a stalwart already, the other one became a stalwart much later, that is Mayawati and Ram Vilas Paswan were fighting also in the fray. So that was memorable. And mind you, I'd never before given a political speech. So you were going for campaignings? Yes. Hame vote dijiyega. No, I was going for campaigning, and everywhere in villages, in towns, and door to door, whatever I could do, I was doing. Yes, I was. Wow. Was it a difficult decision moving from foreign services to hardcore politics? Like what was on top of your mind? Yes and no. Because as a career, I had chosen foreign service, and I had served in it for more than 12 years. Yes.
So I was oriented, I was trained into it, and I was oriented for that. But right from my childhood, politics seeped into me because I had seen it in my house. I didn't understand as a little baby. Of course, I didn't understand. Or when I was growing up, I was seeing all the freedom fighters, the great leaders. Either they were coming to our house, or I was going to their homes with my father. So I was seeing them. And I'm sure in the process I was learning a lot. True. Without my knowing it, I was learning. True. You know, they left an impression and a mark on me. Why do you think Mr. Rajiv Gandhi had so much confidence in you that I'll make you fight from that seat and you won, beating two stalwart leaders? ऐसा क्या था? And that too for the first time, like you were a foreign service officer and cut to. Yes. बहुत छोटा transition है. It was just in a matter of 3-4 days that the decision was made. But he was always very nice to me. He was like an elder brother to me. I have great respect and regard for him. And I don't know why he made that decision, and he reposed so much trust in me. But I'm grateful to him for doing so. Wow. A lot of people who consume our podcast are young. They'll certainly relate with you from that point where you were preparing for foreign services. That is also like a different ball game. Yes. A lot of hard work, a lot of studies. Can you tell us about those days? How difficult was foreign service examination or UPSC? Yes. There were two, 3 reasons why it was more difficult. First of all, I was a mother of 2 little children. And as a mother of 2 little children, you know how difficult it is to really take time out, because every time I took the book, they would say that I should play with them. So I was studying in that, and then there was no computer, no mobile, no Google, nothing. So when I had to go to the library, make notes, and my husband was very helpful. He would go to so many libraries and make notes for me. So everybody was very helpful. My parents were helpful. My parents-in-law were helpful in looking after my little kids while I was studying. And my husband was helpful in making notes for me. That's the love, I guess. Yes. That is true love, I guess, all about helping others to grow. Why not? Yes, yes. That is the real definition of progressiveness, I guess. Because if you aren't making the others around you, if you're not empowering them, yes, exactly. It's not love, I guess. Yes, I get your point, yes. Was it a difficult journey to crack the Foreign Services examination? It is known as one of the most difficult examinations. Yes, it was. It was. I had to study a lot. And mind you, I studied right from what I had studied in 5th, 6th, 7th, 8th, right from there, because there's so much of basic information. As you grow older and you study in higher classes, you tend to overlook those. True. Those are also very, very important. हमारे माँ साहब होते थे, टीचर होते थे, बोलते थे आगे पाठ पीछे सपाट, बिल्कुल वो हो जाता है. तो वो जो सपाट था उसको याद करना बहुत जरूरी था. डिफिकल्ट है. ओ भाई, क्लास 6 में H2 + O2 H2O होता है. अभी शायद आज ऐसे सोच लिया तो याद भी नहीं होगा. Wow. Then you moved into the Fullstream Politics. You served a lot of places. People had utmost respect for you. But what is the life after being the Lok Sabha Speaker? How has been the life? What has changed over those years, after maybe 2014 when you retired? After that, you see, earlier in my life, there are so many things, and I think everybody does that. When you're younger, and when you have commitments, and you say, okay, this work, this is very important, but let me do it later. There's so many things to which you say, oh, it is so important, but I'll do it later. So that later phase has come now. Wow. And all those things which I'd said, okay, I'll do later, now I'm taking them one by one, and I'm saying, and what are these? These must be fun things, that's for sure. Most of it is writing. Okay. Writing, I do writing.
and some also some painting. I'm fond of painting. Are you into music as well? Pardon? Are you into music as well? I used to be, but unfortunately, it so happened that other things took over, and music requires a lot of practice and dedication. It is like tapasya. Yeah. You have to give up so much to dedicate yourself to music. True. तो वो हम नहीं कर पाए. बट अभी भी स्टार्ट हो सकता है. जरूर हो हम यहाँ सकता है. बैठे हुए हैं, मृदंग रखा है, why not? This gives a lot of motivation. आपका अच्छा सजेशन है. Yeah, why not? Yes, yes. मैं तो अपने डैड को हमेशा बोलता रहा, बिल्कुल सितार सीखिए आप, सरोद सीखिए. क्योंकि मजा है. संगीत ही तो एक कामनेस लाता है. संगीत, हाँ, संगीत तो ठहराव लाता है. सबसे ऊंचाई पर संगीत है. Were you a music buff when you were growing old? Yes, Yeah? and I've learned also. What have I've you learned learned? classical music, Wow, yes, wow. from Pandit Amarnath, क्या बात है. क्या from बात है. Indore, Karana. Wow. Yes, but as I'm saying, it is a tapasya which I left. I didn't complete it. Wow. And what were you listening to? Were you like a consumer of classical music, or like films were huge that time? Like Yes, films. Oh, film. Of course, classical music is what I was learning, but film music was also, out of the world. And India has produced some amazing artists. Yes, amazing artists. yes. Then the transition came into life. Now you are writing. A lot of things happen. Do you miss those days of being a Lok Sabha speaker, where सब आते थे and एकदम खुश होके बहुत सारे sessions हुए. I saw one of your interview where you said, my intention is to maximize the sittings. Yes. Did you accomplish that? I would love to know from you. No, I couldn't. Because, you see, let me tell you one thing. I'll present it from the other side of the story. Every member of parliament has an electorate, is representing at least 22, 23 lakhs people. True. And the pressure on the member of parliament, of Lok Sabha, is so much, because most of the time they're contrary demands. Like, if somebody says, you make a road in my constituency, then there'll be demand that this road should pass through our village. Then another group will come and say, no, it should pass through our village. To reconcile all that is a great pressure. True. And that happens every day in all the situations. True. So, in that kind of a pressure, under that kind of a pressure, our MPs work. And the other thing is, because ever since we've started the Lok Sabha TV, and now it is Parliament TV, and Rajya Sabha TV was there. Lok Sabha TV, then Rajya Sabha TV, and now it's Parliament, Sansad TV. It's a very good thing, because people must relate to our Parliament. True. But people also watch, if you are our MP, are you taking up our case very strongly? Are you the loudest in the house? That also is an expectation. True. So sometimes they have to be very loud. Sometimes, and then I would say, why were you so loud? Oh, I got the phone call from my leader of my party. Why aren't you loud? You're not loud enough. So, you see, as Edmund Burke has said, that a representative has to make so many choices between so many contradictory things. Your party, the constitution, the decorum of the house, your conscience, so many things are there, and you have to make a choice. एक जिंदगी का सजेशन आपसे लेता हूँ. क्या जिंदगी में तेज बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या तेज बोलने से ही आपकी आवाज़ या सब कुछ पहुँच सकता है? क्या कामली बात करेंगे तो भी मैं बताऊँ आपको, मैं अगर मेरे अख्तियार में हूँ तो मैं तो कहूँ कि speaking softly should be made a national policy. Okay. हाँ, क्योंकि क्यों ही चीखना?
जी क्यों ही चीखना? क्यों चीखना? क्यों चीखना? क्यों चीखना? इतना टेंशन लेके वैसे ही कुछ मिल नहीं रहा है. How exactly the functioning of a Lok Sabha speaker work? I'm a curious kid. I would love to know. How does it actually work? Like इतने सारे लोगों को संभालना होता है, and how exactly everything works there? Yes, you know, you get the schedule for. Actually, you get it for next 1 week because we have a meeting in the house. I mean, as a speaker, not in the house, but in the conference room, where the leaders of all the parties come, and then we'd say, okay, what are the topics we are going to take up the next 1 week? So broadly that is decided in that. It can change, it is flexible, because sometimes something urgent may come up. True. So then after that there are so many issues which come up. There are so many issues which one party wants to take up, the other party is opposed to it. So they don't want that issue to come up. So, you see the floor of the house. Parliament is made for legislation. True. It has to make law. Law. Now, on any issue, you can only have one law. On any issue, you can't have 2 laws or 3 laws. Right. Only one law. Okay? Now, on that one law, when I was the speaker, I had 39 parties in my house. Now, 39 parties may have different views. True. Now, the floor of the house is meant to reconcile those conflicting views and have one view. So, either they have it through discussion or you have it through voting. Either. So, this is how it runs. Okay. Broadly, but there are of course so many other intricacies. Were you ever impressed with somebody who was absolutely great as a parliamentarian in Sansad? Maybe from other parties, no? There were many very, very intellectual and very articulate, and also, to be a parliamentarian, your speech should have the precision of a scientist and the beauty of an artist. You see, then you are a great parliamentarian. So you should study. Now, as far as naming one particular person is concerned, I don't think that. Name 5, no problem. I'm fine with that. I'm fine with that. There were so many of them. Okay. Sometimes they gave excellent speeches, sometimes it was mediocre, but some were great. Most of them were great, all of them. Even those who didn't have the grasp, because we have so many languages. Your language is Bangla, and Assamese, and Kannada, so many languages. True. So they're fluent in their language, but when it comes to expressing in English or Hindi, it becomes a little difficult. True. So one has to consider that. That is also true. Valid point, absolutely valid point. कि मेरे language में मेरा बहुत अच्छा command हो सकता है, but English हिंदी में शायद ना बोलूँ. Do you watch those like आज के speeches or sessions? Yes. I watch them. What is the outcome? Recently कई बार adjourn हुई है. Adjourn हुई है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि adjourn क्यों कर रहे हैं? Decorum of the house. Even at my time, it was not adjourned. So many times it was adjourned. But I always felt that the decorum of the house should be maintained, and the respect for the chair, the institution of the speaker should always be there. It's a great thing, to be the speaker. First of all, the Parliament of India, there is no parliament which can be compared. Of course, the British Parliament has more MPs, the House of Commons has 100 more MPs than we have, but our MPs have such a large electorate. True. You see? And then we have taken
from so many democracies. We also adopted the British parliamentary system, but we have evolved over. This we adopted in 1947 when we became. In fact, 46 when we had the interim government. Since then, but then over the years we have evolved. True. And once I'll tell you something which really made me feel very proud was that I was in Kenya. Okay. Kenya, and there was a World Speakers Conference. Okay. And the speaker of Kenya told me, Madam Speaker, when I'm in a very difficult situation in the House, I consult the decisions made by the Indian speaker. Wow. And you know, our Lok Sabha Secretariat takes out a book every 1 or 2 years or 3 years, so that all the decisions of the speaker are written compiled. and documented. So he said, I consult those. Wow. So I felt very, because he said the speaker of Lok Sabha faces the most difficult and complex situations. True. That is why. True. मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं सीख पाता, कहीं नहीं पढ़ पाता जितना आपने मुझे बताया आज. नहीं, आप बहुत जानते हैं, ऐसी बात नहीं. आई विल बी रियली ऑनेस्ट. मैं शायद ये सब चीज़ें इतना रिसर्च करके कहीं से नहीं सीख पाता. वो बोलते हैं ना, जिसका जो फोटे है, जिसमें एक्सपर्ट है, उससे वही चीज़ पूछना चाहिए. मैं कभी अगर लाइफ में कभी भी एक किसी केओस के सिचुएशंस में काम डाउन होना सीखना है, मुझे आपकी स्पीच देखना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल दोज यंग बडिंग पीपल जो सोचते हैं कि हमें मेन पॉलिटिक्स में जाना है, बट मे बी आर ट्रैप्ड इन देयर ओन कॉर्पोरेट जॉब, या मे बी कॉलेज में हैं, जिनका पॉलिटिक्स से दूर तक कोई नाता नहीं है. आपका ऑब्वियसली था, बट यू हैड अ वेरी डिफरेंट लाइफ एज वेल एज एन फॉरेन सर्विस ऑफिसर. But that kind of a shift, a lot of people may be watching you now and they may think कि हो सकता है कोई ज्ञान मेरे काम आ जाए, हम हार्डकोर पॉलिटिक्स में चले जाए. मेरे पास बहुत से यंग लोग आते हैं जो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, और वो मुझसे पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में जाए, तो मुझे बहुत खुशी होती है. क्योंकि कभी कभी तो मैं ऐसा सुनती हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ख़राब जगह है, अच्छी जगह नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए. मैं ऐसा सुनती हूँ. तो जब जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ, वो पूछते हैं कि हमें किस तरह से हम जाएं इस पे राजनीति में, तो मुझे बहुत खुशी होती है. क्यों? इसलिए कि राजनीति जो है वो हमारे देश के जितने और कार्यक्षेत्र हैं, जितने भी कार्यक्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था का हो, जितने भी कल्चर का हो, हमारी संस्कृति से संबंधित हो, जो भी है, वो सब के लिए जो नीतियाँ बनती हैं वो वहीं पर बनती हैं जहाँ राजनीति होती है. जो राजनीति में है, तो जितना ही पढ़े लिखे विद्वान और जो समर्पित हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे हैं, मगर जो समर्पित हैं, शुद्ध हृदय से सोचते हैं, वो जितना इसमें आएंगे उतना अच्छा होगा. अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, अलग अलग और इनोवेशंस आएगा. हाँ, और वो नौजवान हैं, उनके सोचने का तरीका आगे ले जाने वाला होगा, और उनमें इतनी ऊर्जा होगी, और वो इतनी मेहनत कर सकते हैं. हाँ, ये है कि उन्हें समर्पित होना चाहिए. हमें हमेशा कहती हूँ, हैव टू बी डेडिकेटेड. निष्ठापूर्वक करना पड़ेगा. फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा. बहुत समय होता है कि हम धन कमाएं कि हम राजनीति में रहें, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं, राजनीति के माध्यम से धन कमा लें, या धन के उपयोग से हम राजनीति में आ जाएं, दोनों को मिला लें. वो नहीं. हमें निष्ठापूर्वक हम क्या कर सकते हैं,
हम हमारे से ज़्यादा हमारा समाज है। हम अपने को पीछे रखें, समाज के बारे में समाज से भी आगे हमारा देश है, देश से भी आगे मानवता है। तो हम उस सब को संतुलन में रखते हुए कैसे करें, ये जो नौजवान हैं, जो सोचते हैं, वो कर सकते हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा जो अगला सवाल है, इफ़ यू चूज नॉट टू आंसर मी, यू कैन फील फ्री टू डू दैट। हाँ, Why is there always a connection of power with politics? मैं आज तक किसी नेता को ऐसा नहीं देखा जो जिसके पास आजू बाजू बाउंसर्स ना हो, या पार ना हो, या पार का गुरूर ना हो। बहुत बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं। क्यों आज के डेट में मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये इतना ज्यादा हो गया है? पावर क्या मतलब कि मतलब हमेशा सिक्योरिटी रखना। नॉट ओनली सिक्योरिटी, इफ यू सी लाइक फॉर एग्जांपल बिहार है, अक्सर लोग बोलते हैं कि गुंडे हैं, बहुत सारे नेता हैं, और हर पार्टी के ऊपर एलिगेशन है, सिर्फ किसी एक के ऊपर नहीं। यूपी में भी कहा जाता है, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, साउथ में भी आप जाइए। क्यों? मतलब व्हाई डोंट वी गेट मोर एंड मोर very much educated people who don't want to indulge in power or don't want to cherish that, but wanted to actually change the country in a very better way? यही मैं कह रही थी कि जब मेरे पास नौजवान आते हैं, वो कहते हैं हमें आना है राजनीति में, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि और नहीं, इसको जो पावर की बात कर रहे हैं वो बाहुबली है, मसल पावर है उनके पास, या वो कुबेर है, धन कुबेर है, उनके पास बहुत पैसा है। वो नहीं, आप कितने निष्ठापूर्वक कर सकते हैं। ये काम है बहुत कठिन काम है। देश की आज़ादी दिलाना बहुत कठिन काम था। लोग जेल गए, उनको तो मार, फांसी पर चढ़ गए, उन्हें क्या मिला, उनके घर को क्या मिला? कुछ नहीं। तो उसी तरह देश का निर्माण करना भी उतना बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं है कि वो आसान है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं, ये तो इससे तो ये भी हासिल हो जाएगा, ये भी हासिल हो जाएगा, ये भी हासिल हो जाएगा, पर देश का तो नुकसान हो जाए। जो सबसे गरीब है, सबसे कमज़ोर है, जो सबसे आखिर में है, जिसको सब धक्का देते रहते हैं, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो मिलना तो उसको चाहिए ना। ट्रू। कैसे लगता है कि वो सबसे जो नीचे वाला है वो ऊपर आ पाएगा? व्हाट इज़ योर ओनली सोल्यूशन? क्या लगता ये है? अच्छे लोग जितना ज़्यादा आएंगे राजनीति में, वो उतना ऊपर आएगा। जितने अच्छे लोग हैं राजनीति में आएंगे तब वो ऊपर आएगा, उसकी आवाज़ बनेंगे तब ऊपर आएगा। क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे, सिर्फ उसके पास जाएंगे वोट लेने, जब वोट लेने जाएंगे तो उसके हाथ जोड़ेंगे, वोट देगा, फिर वो सोचेगा कुछ दिन तक वो खुश रहेगा कि इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में आए, मेरे सामने हाथ जोड़ा, मैं एक वोट के लिए, कुछ दिन तो उसको इसी खुशी में कि बीत जाएगा। पर फिर वो देखेगा कि मैं तो वहीं हूँ। मगर फिर जो वोट लेकर जाए वो उसका सोचते रहे, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो। और ये और जगह उतना नहीं है, खासकर यूरोप के जो जनतंत्र हैं उनमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं है लोगों के बीच। पॉलिटिकल गैप बहुत कम है। पॉलिटिकल गैप इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और जगह में गरीबी और अमीरी का अंतर है। आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत गरीब हैं, पर जो गरीब है उसके पास चीज़ें नहीं हैं, मगर वो किसी दिन अमीर बन सकता है। हो सकता है वो चौल में रहता हो, मगर किसी दिन वो बहुत बड़े महल में रह सकता है। मगर अगर आप जाति व्यवस्था के बीच में रहते हैं तो आप कितना भी पढ़ जाएंगे, आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो जाएगी, आपके पास कुछ भी हो जाएगा, मगर जाति व्यवस्था में अगर आपका स्थान नीचे है तो ऊपर नहीं आता है। तो उससे लड़ने के लिए भी हमारे पास जो नई पीढ़ी है हमारी जो है, उसको कोशिश करनी होगी। इस ऑप्टिमिज्म को बिल्कुल जिंदा रखते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ें बिल्कुल सही होंगी। हाँ, उम्मीद पर ही तो रहते हैं हम। दुनिया कायम है पूरी। माय लास्ट क्वेश्चन एंड टुवर्ड्स द एंड क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा,
if given a chance to go back into history और एक time machine मिले उसमें आपको कहीं वापस जाना पड़े, what is one incident or what is one day of your life or maybe of any India's life जिस दिन में आप जाना चाहो और उस दिन को वापस से देखना चाहो, उसमें जीना चाहो? कोई ऐसा इंसिडेंट अगर लगता है जीवन का सबसे खूबसूरत इंसिडेंट होगा? मेरे अपने जीवन का या आपके जीवन का, जो हो सकता है इंडिया के, जो हो सकता है इंडिया का भी हो सकता हो, दूसरे का भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता, दूसरे का भी हो सकता। एक दफ़ा की बात है 1942 की, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था और उस समय पटना में मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरे पिता जेल में थे और मेरी माताजी चरखा क्लास में जाती थी। चरखा क्लास इसलिए चलाई जाती थी कि सारे नेता तो जेल में भेज दिए गए, अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी लॉ को कैसे जलाए रखें। तो वो चरखा क्लास में जाकर के उनके घर की महिलाएं आपस में एक दूसरे को बताती थी, तो मेरी माँ भी जाती थी। तो एक दिन वो गई तो वहाँ उन लोग उस समय मोबाइल वगैरह तो था नहीं, रेडियो भी नहीं था, तो जाने पे वहाँ ताला लटका हुआ था और वहाँ जो थे पास में उन्होंने कहा कि पटना में मार्शल लॉ लगा हुआ है और शूट एट साइट ऑर्डर है, आप तुरंत घर जाइए। अब वो शूट एट साइट तो ऑर्डर हो गया था। माँ वहाँ से लौट रही थी तो इधर से एक लॉरी आई, उसमें बंदूक ताने हुए सब सिपाही खड़े थे। माँ की तरफ भी बंदूक ताना उन्होंने, माँ ने आँख बंद कर लिया कि अब गए। तो मगर वो लॉरी चली गई, फिर 5 घर की तरफ आने लगी, फिर वो लॉरी लौट करके आई और फिर बंदूक ताने हुए। मैंने कहा पिछली दफ़ा छूट गए थे, इस दफ़ा तो गए। तो उन्होंने फिर नहीं मारा, तो चले गए वो लोग। माँ घर पहुँच गई। बहुत दफ़ा मैंने माँ से कहा, माँ तुम्हारी जगह मैं होती तो बहुत अच्छा रहता। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। कि वो डर कैसा है या उनमें क्या अच्छाई थी जो मुझे छोड़ दिया? क्या था वो? What was it? And they were Britishers, of course, right? That time, you know, the British during the the Quit India movement, they became a little apprehensive of the Indian soldiers in the British Army. So they got soldiers from America. They were called Johnnies. Yes. So they were the ones who were in that lorry. So so many times I told my mother, I wish I was there. Okay. My last question to you is, आज से 25 साल बाद करीब हमें 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे. हाँ. What is your dream of that India? How do you want to see that India as? Equality. Equality is very important. Inequality is pulling us back. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपने जीवन के बहुत सारे किस्सों को शेयर करने के लिए, एकदम ऑनेस्ट रहने के लिए और जैसा आप बात करती हैं बिल्कुल वैसे ही बात करने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट. Thank you so much. Thank you. My good wishes to the audience. Thank you so much. Thank you. And that was a fresh new episode of Wassup Aabir podcast. Thank you. Bye-bye.